Hello friends, welcome to Aasaan IAS. Hope you are enjoying this program. Transform into an IAS officer in 100 days. So now I am going to recap episode 2. Just in 40 minutes we will see whatever we have seen in episode 2, we'll just revise. Friends, if you can believe, you may start. But if you can understand, you will achieve. Friends, you know that I have divided environment into 5 parts. Introduction, wetlands, biodiversity, climate, environment related laws, movements, organizations, etc. बार बार दिखा रहा हूँ, बोर फील मत होना, because आपको ये literally याद होना चाहिए. That's why I am showing again and again. So in episode 2, we have seen biodiversity. I further divide this into 3 subparts: introduction to biodiversity, conservation of biodiversity, important species. In episode 2, we have seen the first 2 parts: introduction to biodiversity and conservation of biodiversity. Now I will recap that. First, what is biodiversity? We have understood the definition of biodiversity given by CBD. So, biodiversity means variability among living organisms. Simple keyword is this: living species में जितना variety है तो उतना biodiversity है. So variability among living organisms including all sources. Sources means it could be from land, or that diversity can be from aquatic life, or can be other aquatic systems, not only marine life, other aquatics, or maybe mixed combination of these like mangroves. कहीं से भी है. All sources and all levels. All levels means the same species but because of having different genes. So genetic diversity be included hai, species diversity be included hai, ecosystem or community diversity is also included. So all levels, all sources, variability among living organisms is known as biodiversity. Then we have understood what is endemism. If a species is found only in a particular region, if it is not found anywhere on this planet other than that region, then we can call that species is endemic to that particular region. So those species which are found nowhere except that region to which they are endemic. Then we have seen the estimated number of species. It is just an estimation. Approximately 8.7 million species are estimated to be present on this planet. Out of that, major means 75% approximately might be present on land and 25% in oceans. So more on land, estimation. But out of that, only 10 to 12% of species are only till now recorded or discovered. Remaining are yet to be discovered or recorded. After that, we have seen levels of biodiversity. Genetic diversity, that means same species में different genes में difference है, and species diversity, that means different species living in a particular region, and ecosystem or community diversity, that means the whole habitat itself is different. Some species live in a pond, some species live in ocean, some species live in a forest, like that kind of diversity. Then measurement of diversity. So richness and evenness. Richness means more variety of species are present, that means more richness. Evenness means all species are almost present in equal number, then more evenness. Or 99% of species of the planet is X species, and other species are very less in number, then evenness is less. Are you getting me? So evenness, and again richness is 3 types. Alpha diversity, that means particular region or particular ecosystem का diversity का count करे variety of species को, that is alpha diversity. If you compare 2 ecosystems or 2 region, and if you compare the diversity between those 2 ecosystems, then it is beta diversity. If you mix all the ecosystems or regions and overall diversity की बात करें, that is gamma diversity. Not very important. Then services, all ecosystem services. Ecosystem services means जो life cycle चलने के लिए जो भी काम हो रहा है automatically, like waste, you can say pollution, recycling of pollutants, or whatever it is going on, the nitrogen cycle, carbon cycle, all these cycles which we learn in part 1. So वे सारे because of biodiversity, because हर species का कहीं तो कहीं role है इस cycle में. Similarly, biological services like food, medicines and all we get from biodiversity only, and social services like tourism, recreation, entertainment purposes. Then threats, all natural threats which can disrupt the biodiversity, that means which can cause loss to life. So like climate change, global warming, all these things we can take. And man-made causes like especially habitat destruction, because most of the loss to biodiversity is happening because we are destructing their habitat because of our demand, or because we need more land.
for ourselves. That is the main reason. Otherwise, all other actions done by man which can cause loss to diversity. Getting me? After that, we have seen biodiversity distribution. You know, biodiversity is not evenly distributed on this planet. That means it is not equal at every place. It is rich in tropics. Tropics में biodiversity ज़्यादा है, and if you move towards poles, biodiversity decreases. So biodiversity decreases with latitude. So if you go to higher latitudes, like towards poles from equator, biodiversity decreases. It is richer in tropics. Similarly, decreases with altitude in mountain gradients. In mountains, if you go to the top ऊपर पहुंचेंगे, altitude बढ़ेगा तो biodiversity decrease होगा. क्योंकि primary productivity decreases. Primary productivity means producers. Producers means like green plants. जो plants होगा, because हम तो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर पाएंगे. We do not know how to produce our own food from sunlight. Plants know it. So from plants we depend on those. So obviously that प्रोडक्टिविटी इज लेस, ऑटोमेटिकली ऑल द ट्रॉपिक्स लेवल्स पे जो उसके ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होगा उसका नंबर भी कम होगा. सो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड एंड बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस विद लैटिट्यूड. सिमिलरली वी हैव सीन मेगा डाइवर्स कंट्रीज. इन ओशंस की बात करें, जो पैसिफिक में ज्यादा है बिकॉज वहां सी सरफेस टेम्परेचर ज्यादा होता है, दैट इज आइडियल. सिमिलरली अगेन आइडियल फॉर आल्गे एंड जो उसके लिए बनाने के लिए. Similarly, if you see mid latitude bands of all oceans, वहां टेम्परेचर आइडियल होता है. सो वहां ज्यादा है. मैरीन में बात करें, बायोडाइवर्सिटी वहां ज्यादा है. देन वी हैव सीन मेगा डाइवर्स कंट्रीज. 17 कंट्रीज आर डिक्लेयर्ड एज मेगा डाइवर्स कंट्रीज एंड 70% ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन कंट्रीज में है. एंड हु डिक्लेयर दीज एज मेगा डाइवर्स कंट्रीज? एक एनजीओ है, नॉट यूनाइटेड नेशंस और somebody is declaring, only an NGO is declaring. The NGO name is Conservation International. And what are these 17 mega diverse countries? If you take America, USA, Mexico, South America की बात करें, पेरू, इक्वेडर, कोलंबिया, वेनेजुला एंड ब्राजील. अफ्रीका की बात करें, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो. सिमिलरली वी हैव साउथ अफ्रीका एंड मडागास्कर. एशिया की बात करें, इंडिया, चाइना, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया. इफ यू टॉक ऑफ ओशियाना एंड एशिया पैसिफिक, Papua New Guinea and Australia. So these are 17 mega diverse countries. Mega diverse India. India is also a mega diverse country. In India, 2.4% of land area of the world India में है, and it is home to 7 to 8% of the species of the world. And India is part of 2 realms. Realms are largely, large areas with similar vegetation and biota. And the whole world is divided into 8 realms. India is part of 2. They are Pale Arctic and Indo-Malay. जो Himalayan portion will go into Pale Arctic and rest of the subcontinent is in Indo-Malay realm. And India में 5 biomes है, 10 biogeographic zones and 25 biogeographic provinces. Don't remember, you do not require the names. I will do this in geography. Leave it. After that, we have understood biodiversity hotspots. Biodiversity hotspots are declared if that region is species rich with endemic species. That too, most of the species are endemic. That means they need to be protected. And 70% of the biodiversity is already lost. That means there is a threat. Generally, the criteria is it must be home for 1500 vascular plants. I say endemic 1500 minimum variety of plants, endemic plants वहाँ होना चाहिए. And second, 70% of the biodiversity is already lost. That means 30% is only present, so it is under threat. So it need to be protected. That is the criteria. But you need not require to remember the criteria. Just understand species richness है वहाँ. That too endemic species ज़्यादा है and threat भी है. Then that is declared as biodiversity hotspot. And who declared this? Actually, this concept was brought by Norman Maier. Till now, 35 biodiversity hotspots are declared. I mean, mostly they are in tropics because biodiversity is higher in tropics. Obviously, जो hotspots भी tropics में ज़्यादा मिलेंगे, and they occupy only 2.3% of land area, but they are home to more than 50% of diversity. So you can understand their importance. Again, these are also declared by Conservation International, NGO. And if you see, India में there are 4: Eastern Himalaya, Indo-Burma, Western Ghats, and Sri Lanka, Andaman Nicobar, which is part of Sundaland. So Eastern Himalayas,
इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, सुंडालैंड में हमारा अंडमान निकोबार पार्ट होगा. सो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में इंडिया का लैंड प्रेजेंट है. एंड इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड, आई एम नॉट गिविंग ऑल 35, इंपॉर्टेंट दे रहा हूं. करेबियन आइलैंड्स, tropical Andes, Brazil Atlantic forest and Mediterranean basin, eastern arc and coastal forests of Tanzania and Kenya, Madagascar, Japan, Philippines, southwest Australia, eastern Australia, New Zealand. These are all biodiversity hotspots. एंड कंजर्वेशन इंटरनेशनल, इट इज एन एनजीओ. इसका हेडक्वार्टर्स है अर्लिंगटन में, वर्जीनिया में, बट नो नीड टू रिमेंबर. एंड मेगा डाइवर्स कंट्रीज का कंसेप्ट भी इनका है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का कंसेप्ट भी इनका है. एंड इट पब्लिशेस वन ईयरली पब्लिकेशन नेम्ड ओशन हेल्थ इंडेक्स. जिस कंट्रीज में ओशन है वहां ओशन का हेल्थ का मतलब कितना कोरल रीफ्स खराब हो गया, मैंग्रोव्स कैसा है, वे भी ये पब्लिश करेगा, ओशन हेल्थ इंडेक्स. एंड इट इज एन इन्वेस्टर इन CEPF, क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड. ये क्या करता है, ऐसा जो क्रिटिकल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, जो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इकोसिस्टम्स को आइडेंटिफाई करेगा एंड उसमें जो भी ऑर्गेनाइजेशंस उसको प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रहा है उनको फंडिंग देगा. बट नो नीड टू नो दिस मच, जस्ट लीव इट. होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस. After that we have seen important conventions. Then Rio Earth Summit was held, also known as simply Earth Summit or Rio Summit or United Nations Conference on Environment and Development. It was held in 1992 in Rio de Janeiro, Brazil में. And इसमें 3 documents were released. They are Rio Declaration on Environment and Development. Second is Agenda 21, what should be done in the 21st century. Third is Forest Principles. Similarly, 3 conventions have originated from this conference. They are Convention on Biological Diversity (CBD), UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change. Similarly, UNCCD, United Nations Convention to Combat Desertification. Rio +5, that means 5 साल के बाद, that is in 1997, again they met in New York. So Rio +5, it is the first meeting after this conference on sustainable development in New York. Then Rio +10, 10 years के बाद, that means in 2002, they again met in Johannesburg. Then again 20 years के बाद, that means Rio +20, we call it Rio +20, or you can call Earth Summit 2012 or Earth Summit +20. So that was held again in Rio de Janeiro. Then Convention on Biological Diversity, 3 important goals. One is conservation of biodiversity, second is sustainable use of these biological resources, and third is sharing of benefits arising from these resources in a fair and equitable way between the country who is giving the resources and between the other countries who is developing, making commercial. ओके, नाउ इसके अंडर एक इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, कार्टाजीना प्रोटोकॉल. सो इट इज द मेन गोल ऑफ दिस इज टू गवर्न द मूवमेंट ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जो लाइक बीटी कॉटन, जो भी और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को मूवमेंट को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को गवर्न करेगा. एंड इट केम इनटू फोर्स इन 2003, नो नीड टू रिमेंबर द ईयर, दैट 15 साल हो रहा है. बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस वाज एस्टैब्लिश्ड टू लुक आफ्टर दिस. दिस हाउस विल टेक केयर ऑफ द मूवमेंट. Similarly, you see, to implement any convention at international level, every country has to do it at national level. That's why all these treaties have national action and international cooperation. So to do this, to implement this act, Convention on Biological Diversity Convention at national level, we have passed an act called Biological Diversity Act 2002 में पास किया है. So the main purpose is conservation of biological resources and associated knowledge. सेकेंड, एक्सेस इन सस्टेनेबल मैनर एंड थ्रू ए प्रोसेस. उसके एक्सेस एक सस्टेनेबल एंड एक प्रोसेस के थ्रू प्रोवाइड करेगा. इसको इंप्लीमेंट करने के लिए इस एक्ट को एक स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी को हम फॉर्म किया है, दैट इज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, NBA. द मेन पर्पस ऑफ दिस इज टू स्टॉप बायोपायरेसी, टू प्रिवेंट बायोपायरेसी, एंड नो IPR कैन बी अप्लाइड विदाउट द अप्रूवल ऑफ NBA. Getting me? So this is all about BDA and NBA. Then Nagoya Protocol came. So Nagoya Protocol का main goal is sharing the benefits arising from the utilization of genetic resources in a fair and equitable way. It came into force in 2014 and इसको implement करने के लिए ABS clearing house को establish किया, Access and Benefit Sharing Clearing House.
Then Aichi targets were discussed in Nagoya में मिला 2010 में, but after 4 years it came into force. So when they met in 2010 Nagoya, they discussed about Aichi targets also. What are these? They declared 2010 as International Year of Biodiversity. Similarly, they declared 2011 to 2020 decade as International Decade of Biodiversity. And Aichi targets are to be achieved by 2020. What are these targets? There are some basic targets like creating awareness among public and all. So all countries have to do that. That is what is the main goal of that. Just Aichi target name याद रखिए, काम हो जाएगा आपको. Then Biofin. So Biofin is a global partnership addressing the biodiversity finance challenge. So to conserve biodiversity, any financial issues are there, this Biofin will solve that issue. How it is actually, it is a global partnership implemented by UNDP, United Nations Development Program will implement it. It was launched in India when they met in COP11 in Hyderabad in 2012. एंड इंडिया में इसका होस्ट है, इसको इंप्लीमेंट करेगा NBA, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी. एंड नाउ इट इज प्रेजेंटली इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन 30 कंट्रीज. इंडिया इज वन अमंग देम. इसमें क्या है, अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा तो दिस UNDP ब्रिंग एन इन्वेस्टर आल्सो दिस बायोफिन प्रोग्राम, एंड उस इन्वेस्टर से कुछ सेटल करके वे चैलेंज को सॉल्व करेगा. होप यू गॉट इट. दिस इज ऑल वी हैव सीन इन इंट्रोडक्शन टू बायोडाइवर्सिटी. After that we have seen conservation of biodiversity. उसमें पहले हमने देखा modes of biodiversity conservation. There are two modes. One is in situ, other is ex situ. Ex situ means conserving biodiversity outside the areas where they naturally occur. That means we do not conserve the habitat. We only conserve the species. That means we bring them to some other place where we protect them. For example, botanical garden where we preserve plants. It is for flora. Similarly, zoological parks for fauna. That means for animals. These are best examples. These are the examples of ex situ conservation. Similarly, even you see, suppose I say एक you can say tiger safari. कहीं एक शहर में tiger safari बनाया. This is also, you see, tiger safari में we are creating a park, artificial park, and वहाँ कुछ tiger को लेके preserve कर रहा है. Of course, tourism भी allowed है, but we are protecting. We are not protecting their natural habitat. That also is an example of ex situ. कहीं एग्जाम में ऐसा चीज आएगा तो आप common sense से decide कर लीजिए. Ex situ means only we are protecting the species. The area is not important. Getting me? So in situ means we are protecting where they are found, actually naturally found. Conserving biodiversity in their natural habitat. That means by creating protected areas. Examples are national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, conservation reserves, community reserves, etc. But community reserves, conservation reserves are not important. बार national parks, wildlife sanctuaries mind में रखिए, biosphere reserves. That's it. Now after that we have seen protected areas. What are these? If you see in India, 4.89, approximately 4.9% of geographical area are protected areas. Approximately mind में रखिए, no need to mug up. 30% तो नहीं है, बस इतना समझ लो. 733 protected areas है total. Out of that 103 national parks are there, 537 wildlife sanctuaries are there, 67 conservation reserves are there, and 26 community reserves are there. Just no need to mug up. नेशनल पार्क की बात करें, इट इज डिक्लेयर्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिक्लेयर एंड हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होता है यहाँ. दैट मीन्स नथिंग, नो एक्टिविटी इज अलाउड. Alteration of boundaries can be done only on the recommendation of National Board for Wildlife. And highest number of national parks are there in Madhya Pradesh, 9 number. State wise बात करें, ओवरऑल बात करें, यूटी को भी कंसिडर करेंगे तो अंडमान निकोबार में भी 9 नेशनल पार्क्स है. Wildlife sanctuaries, again they are declared under Wildlife Protection Act 1972. Central government or state government may declare. Compared to national park, wildlife sanctuary will have less degree of protection, like grazing kind of activities are allowed here. No economic activity, only grazing type, like no people houses नहीं होंगे. Alteration of boundaries can be done only on the recommendation of National Board for Wildlife. And the highest number of wildlife sanctuaries are in Maharashtra, 14 number. State की बात करें, अगर ओवरऑल बात करें, अंडमान निकोबार में 96 wildlife sanctuaries are there.
Then biosphere reserves. Biosphere reserve is not any areas separately made like national park or wildlife sanctuary. वे कुछ 2-3 national parks को 4-5 wildlife sanctuaries को सब मिला के biosphere reserve declare होता है. It is not any special. It is a superset of national park under wildlife sanctuary. So these are nominated by national government, adhere to minimal set of conditions for inclusion in MAB. So MAB program is maintained by, MAB means man and biosphere. This is a concept developed by UNESCO. So under this program, इसको जो भी कंडीशंस है उसको फुलफिल करने वाले करते हुए कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स को आवर गवर्नमेंट विल डिक्लेयर, नेशनल गवर्नमेंट, नॉट स्टेट गवर्नमेंट. अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस बायोस्फीयर रिजर्व कुड बी पार्ट ऑफ मोर देन वन स्टेट आल्सो. आर यू गेटिंग मी? फॉर एग्जांपल नेशनल पार्क अगर कंटिन्यूसली भी इंपॉर्टेंट एरिया है तो लाइक यू से बंदीपुर एंड मुदुमलाई. बंदीपुर इज ए नेशनल पार्क इन कर्नाटका, मुदुमलाई इज ए नेशनल पार्क इन तमिलनाडु, बट इट इज कंटिन्यूस, इट इज वन ओनली. अगर एक ही स्टेट होगा तो उसका एक ही नाम दिया होता है, बट 2 स्टेट्स होने के कारण तमिलनाडु हैज गिवन मुदुमलाई नेम एंड उसकी कंटिन्यूशन इन कर्नाटका बंदीपुर नेम, बट इट इज ऑल कनेक्टेड. Are you getting what I am saying? But biosphere reserve can be, it is a central government declare and it can be part of more than one state, like Nilgiri Biosphere Reserve. It is majorly in Tamil Nadu, but it is even Bandipur will come under this. That means it is into Karnataka also, it is into Kerala also, like that. Getting me? Now UNESCO's MAB is an intergovernmental scientific program. वे कैसा प्रोटेक्ट करना है, I mean those scientific ideas will be shared by UNESCO to the member countries. So if you see again इसमें 3 zones होता है. core zone is like mostly a national park which is very important. That means वहाँ high degree of protection, like no grazing, nothing will be done. And buffer zone, surrounding zone of core zone, where limited activities like grazing, fishing will be allowed. And transition zone वहाँ लोग भी रहता है, even there is यहाँ man भी होता है, means economic activity भी होगा, agriculture भी होगा, but in a sustainable way because the knowledge will be shared how to do it. Getting me? So that is what is all about biosphere reserve. If you see, I will show you the important biosphere reserves. Total 18 biosphere reserves we have declared our government, but out of them 10 are connected to MAB program, 8 are not connected to MAB program. Now we will see those 10 biosphere reserves which are connected to MAB program. They are Nanda Devi in Uttarakhand, we have Nokrek in Meghalaya, we have Sundarban in West Bengal. Then सेंटर की बात करें, पचमरही इन मध्य प्रदेश, we have अचनकबार, अमरकंटक इन मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, जहां से नर्मदा रिवर, सोन रिवर ऑरिजिनेट हुआ है. देन वी हैव सिमलीपाल इन ओडिशा. साउथ की बात करें, नीलगिरी मेजरली इन तमिलनाडु बट पार्ट ऑफ कर्नाटका एंड केरला आल्सो. दिस वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व. In fact, the first biosphere reserve which was declared was Nilgiri. Then we have Agastyamalai. Agastyamalai is in Kerala, which was added to this MAB program recently. 2016 में ही it was added to MAB program. Then we have Gulf of Mannar, Tamil Nadu. And one more is there, Great Nicobar in Andaman Nicobar, the last. Are you getting me? So these are all important biosphere reserves, not important, all 10 biosphere reserves which are connected to MAB program. Now we will see those 8 biosphere reserves which are not connected to MAB program. They are Dehang Debang in Arunachal Pradesh, Dibru Saikhowa in Assam, Manas in Assam. Similarly, we have Kanchenjunga in Sikkim. It was into news last year because it was inscribed as India's first mixed site on UNESCO's World Heritage List in 2016. UNESCO में कुछ cultural sites होता है, culturally important, कुछ natural sites होता है, naturally important. This is listed into UNESCO's World Heritage Site as both cultural and natural, that is as a mixed site. Then we have cold desert in Himachal Pradesh and we have Rann of Kutch in Gujarat. Similarly, we have Panna in Madhya Pradesh and we have Seshachalam in Andhra Pradesh, जहाँ तिरुपति बालाजी टेम्पल है. So these are all 8 biosphere reserves which are declared by our government but not connected to MAB program. Hope you got it. Then we will see important national parks. First important national parks in Jammu Kashmir. We remember 2 parks at least. Dachigam, यहाँ कश्मीर स्टैग यहाँ मिलता है. कश्मीर स्टैग इज नेशनल एनिमल ऑफ जम्मू कश्मीर, आई मीन स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू कश्मीर. इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट स्पीसीज नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे. वास्ट वेरिएशन इन आल्टीट्यूड,
वन साइड इज वेरी लो आल्टीट्यूड ग्रासलैंड से लेके हाई रॉकी आल्टीट्यूड, हाई आल्टीट्यूड तक यहाँ देखेंगे, एंड इट इज इन जबरवान रेंज. Similarly, if you see Hemis National Park is the largest national park in India, and it is the only national park which is completely into pale Arctic zone. You know, India is part of two realms, pale Arctic and Indo-Malay. This park is entirely into pale Arctic, and Indus River flow through this. The northern bank of this northern boundary of this national park is Indus River, and it is in Janskar range. वे ranges हम geography में detail में पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा. After that, national parks of Himachal Pradesh, we remember Pin Valley National Park, which is in Spiti Valley, Spiti River, Pin River. एंड यहाँ धनकर मोनास्ट्री है, उसके बारे में एक कोई इंपॉर्टेंट नहीं, वे हम बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे. सो पिन वैली नेशनल पार्क इज इन हिमाचल प्रदेश, इवन पिन रिवर इज इन हिमाचल प्रदेश. सिमिलरली वी हैव ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क विच इज इन हिमाचल प्रदेश. कोई याद रखने की जरूरत नहीं, इट वाज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिकॉग्नाइज हुआ 2014 में, बहुत पुराना हो गया, अभी याद रखने की जरूरत नहीं. जस्ट ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे है, बस इतना माइंड में रखना, हिमाचल प्रदेश में है. Now we will see the national parks, important national parks in Uttarakhand. Namdev National Park is there in Uttarakhand, जिसके थ्रू ऋषि गंगा river flows. Similarly, we have Valley of Flowers, जो हेमकुंड साहब जाएंगे तो हम देखेंगे. So Pushpavati river flows through this national park, and we have Jim Corbett, very important. It was the oldest or first national park, and Ram Ganga river flows through this. Then we will see important national parks in Uttar Pradesh. ये कोई खास का नहीं, जस्ट एक नेशनल पार्क का नाम याद रखिए. दूधवा नेशनल पार्क वेस्टर्न यूपी में है. देन नेशनल पार्क्स इन हरियाणा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क एंड बर्ड सैंक्चुरी नियर गुरुग्राम के आसपास, हरियाणा में है. देन इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स इन सिक्किम, कांचनजंगा याद रखिए सिक्किम में, यू नो दैट, ये ज्योग्राफी में पढ़ेंगे. इट इज थर्ड हाईएस्ट पीक कांचनजंगा, इंडिया फर्स्ट मिक्स्ड साइट ऑन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट 2016 में अनाउंस हुआ है, यू नो दैट ऑलरेडी वी हैव सीन. इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स इन अरुणाचल प्रदेश, वी हैव नामदफा नेशनल पार्क. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज इन दफाबम रेंज, मिसमी हिल्स की पार्ट है दफाबम रेंज. सिमिलरली पटकाई रेंज इन रेंजेस के बीच में है, एंड नोवा दिहिंग रिवर फ्लोस थ्रू दिस. यहां सारे मेजर प्रेडेटर्स आपको दिखेगा, लाइक लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड टाइगर, ऑल यू फाइंड हियर. एंड इट इज नोन फॉर अगेन आल्टीट्यूड वेरिएशन. सदर्न साइड देखे ऑलमोस्ट सी लेवल पे होगा, नॉर्थन साइड देखे बहुत हाई आल्टीट्यूड पे पहुंच जाएगा. सो हाई आल्टीट्यूड वेरिएशंस, एंड यहां आपको ऑल क्लाइमेट्स आपको दिखेगा, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, इवन आर्कटिक एंड टेम्परेट क्लाइमेट सारे इस नेशनल पार्क में मिलेगा. व्हेन यू मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, द क्लाइमेट आल्सो चेंजेस फ्रॉम ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट एंड आर्कटिक. सो दिस इज नोन फॉर वेरिएशन ऑफ क्लाइमेट. देन मणिपुर की नेशनल पार्क की बात करें, वी हैव कीबुल लमजाव नेशनल पार्क. इट इज स्पेशल बिकॉज इट इज इनसाइड द लेक लोकताक, जो लोकताक लेक के अंदर है, यहाँ संगाई डियर मिलता है, एंड दिस इज यूनिक फ्लोटिंग वेजिटेशन. ये नेशनल पार्क इज ऑल फ्लोटिंग ऑन लोकताक लेक. देन इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स ऑफ मेघालय की बात करें, नोक्रेक जो गैरो हिल्स में है. Similarly, we have Balpakram, ये भी गैरो हिल्स है. Nokrek and Balpakram are in Meghalaya. So these are two important national parks you can keep in mind from Meghalaya. Important national parks of Assam की बात करें, मानस नेशनल पार्क, जिसके थ्रू मानस रिवर जाता है. मानस रिवर flows through this, which is connected to Royal Manas National Park of Bhutan. Similarly, Kaziranga, it is very important national park because rhino population यहाँ ज्यादा है. It is known for Indian rhino. Similarly, ब्रह्मपुत्र river, धनसिरी river, डिफ्लू river, ये सारे इसके थ्रू फ्लो करता है. Almost this national park को सराउंड करता है ये सारे rivers. That's why this national park is known for floods. हर साल floods आता है. And it is very important for bamboo and cane. Cane furniture is famous from Assam. Cane की यहाँ नेशनल पार्क में भी बहुत होता है, rhinos and all. Even if you see नमेरी के थ्रू भी नमेरी रिवर जाता है, कमेंग रिवर जाता है. Similarly, we have Warang National Park on the bank of Brahmaputra River. So these are four important national parks you can keep in mind from Assam.
Similarly, West Bengal की बात करें, न्योरा वैली नेशनल पार्क जिसके थ्रू न्योरा रिवर फ्लोज, एंड वी हैव जलदापारा नेशनल पार्क जिसके थ्रू टोरसा रिवर फ्लोज. ये सारे बॉर्डर ऑफ बंगाल एंड असम, सो नॉर्थन वेस्ट बंगाल में. अगर इधर आप बात करेंगे सदर्न साइड, सो वी नो दैट सुंदरबंस आर देयर. Then we see important national parks of Odisha, Bhitarkanika, you know the second largest mangrove, and Brahmani Baitarni river flow through this. Similarly, we have Simlipal. Simlipal is well known for malaria. It is a malaria prone area, and many rivers, as many as 12 rivers flow through this national park. No need to remember the names. But Simlipal is very important name. Keep in mind, it is in Odisha. That's it. छत्तीसगढ़ की बात करें, इंद्रावती नेशनल पार्क ऑन द बैंक ऑफ इंद्रावती रिवर which is a tributary of Godavari which flow through this national park. Similarly, important national parks of Madhya Pradesh की बात करें, कन्हा नेशनल पार्क is there, बांधवगढ़ नेशनल पार्क is there, and we have पेंच नेशनल पार्क, जिसके थ्रू पेंच रिवर जाता है, and we have पन्ना के थ्रू केन रिवर जाता है. Are you getting me? Ken is a tributary of Yamuna. Then we see important national parks of Rajasthan. We have Desert National Park, which is known for Great Indian Bustard. We will see in next topic. Keladiyo National Park, उसको पहले भरतपुर नेशनल पार्क बोलते थे. So which is at the confluence of Gambhir and Banganga rivers, which is also in the Montrex record, Keladiyo. Similarly, we have Ranthambore National Park, confluence of Banas and Chambal. Then we will see important national parks of Gujarat. So we have Gir National Park. It is the only place where you find Asiatic lines. Now the government is planning to shift these, relocate these lines into some other park. We will see this in next video. Don't worry. वे हम species की topic में देखेंगे. फिलहाल के लिए इतना माइंड में रखना, गिर नेशनल पार्क is in गुजरात. Then important national parks of Tamil Nadu की बात करें, मुकुर्ती नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क which is also known as top slip, and we have मुदुमलाई नेशनल पार्क. Then important national parks of कर्नाटका की बात करें, बंदीपुर जिसके थ्रू कागनी रिवर जाता है, बनरघट्टा which is on the outskirts of Bengaluru city, and we have नागरहोल जिसके थ्रू भी कागनी रिवर जाता है. In fact, नागरहोल, बंदीपुर and मुदुमलाई are interconnected. Between नागरहोल and बंदीपुर कागनी river flows. So it is dividing the two national parks. Then important national parks of Kerala की बात करें, we have Silent Valley National Park. We learn it in 5th part, that is the Silent Valley movement. So वहाँ भी एक important history है, हम देखेंगे केरला में है, जिसके थ्रू कुंती पूजा रिवर जाता है. And Silent Valley movement, what is this movement, we will see in the other part. Then Ernakulam National Park, which is in Kerala, Periyar National Park also in Kerala, जिसके थ्रू Periyar river and Pamba river flows. Periyar is the largest west flowing river of Kerala. Then we will see important national parks of Andaman Nicobar. Saddle Peak National Park. Saddle Peak is the highest peak in Andaman, and ये जो national park है वहाँ. And Button Island National Park, Mount Harriet National Park, and similarly we have Campbell National Park, Campbell Bay National Park, part of Great Nicobar Biosphere Reserve. Hope you got it. Then we will see marine national park. There are only 5 marine national parks in India. Gulf of Kutch in Gujarat, Malwan in Maharashtra. We have Gahir Mata. Gahir Mata is continuation of Bhitarkanika only. उसी का बीच को Gahir Mata बोलेंगे. Gahir Mata marine national park of Odisha. Then we have Gulf of Mannar in Tamil Nadu, and we have Mahatma Gandhi marine national park in Andaman Nicobar. These are only 5 marine national parks in India. And we have bird sanctuaries. Important bird sanctuaries की बात करें, Sultanpur bird sanctuary near Gurugram in Haryana. Similarly, we have Bharatpur bird sanctuary, Keladiyo, that is in Rajasthan. Now we call it Keladiyo National Park. Similarly, Nal Sarovar bird sanctuary in Gujarat. Then center की बात करें, we have Chilka Lake bird sanctuary in Odisha. Chilka Lake is the largest lake, you know that. And Mayani bird sanctuary in Maharashtra. Salim Ali bird sanctuary in Goa, which is inside the river Mandovi river. Actually Mandovi river के बीच में एक island है, चौराव island. वहाँ एक mangrove forest भी है, हम देखा है. तो वहाँ Salim Ali bird sanctuary है. Then साउथ की बात करें, कौंडिन्या बर्ड सैंक्चुरी शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व में पार्ट है आंध्र प्रदेश में. Similarly, we have Vedantagal. It is in Tamil Nadu, oldest bird sanctuary, Vedantagal. Then we have Rangantittu bird sanctuary in Karnataka. It is on Kaveri river, just besides
Krishna Sagar Dam was built and is a dam on Kaveri River. We learn about this in geography. उस डैम के बगल में है रंगनतिट्टू बर्ड सैंक्चुरी कर्नाटका में. Similarly, we have Kumarkom bird sanctuary in Kerala, which is in this Vembanad Lake की जो mangroves में part है. So Kumarkom bird sanctuary. So these are important bird sanctuaries you can keep in mind. After this, we have seen Project Tiger. Tiger is our national animal, and India is home to almost 70% of global tigers. Now, 2016 की जो report के हिसाब से around 3,800 tigers are there in India. Approximate idea. 20-30,000 तो नहीं है, बस एक आइडिया माइंड में रखना. Then what is Project Tiger? So it is an ongoing centrally sponsored scheme of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, providing central assistance to the tiger states. जिस states में tigers है, उस states को center will sponsor for the conservation of tiger reserves or tigers in designated tiger reserves. Then it was launched in 1973. Objectives are to limit factors that leads to reduction of tiger habitats. पहले habitat को protect करेंगे तभी tigers को protect कर पाएंगे. So tiger habitats को जो कम करने वाला factors को रोकना है and to mitigate them by suitable management and उसको धीरे धीरे mitigate करें उस factors को. Similarly, to ensure a viable population of tigers for economic, scientific, cultural, aesthetic and ecological values. So tiger का number भी बढ़ा है. These are the two objectives of Project Tiger. Then core buffer strategy. जैसा बायोस्फीयर रिजर्व में कोर बफर एंड ट्रांसमिशन जोन्स होता है, यहाँ कोर जोन बफर जोन दो जोन्स होता है. सेम कंसेप्ट. कोर जोन मींस इट इज फ्री फ्रॉम ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज. दैट मींस हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन. इट हैज द लीगल स्टेटस ऑफ ए नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी. देन बफर जोन आर सब्जेक्टेड टू कंजर्वेशन ओरिएंटेड लैंड यूज. वहां लैंड को यूज कर सकता है बट वी यूज इट इन ए conservation oriented way. So it comprises forest and non-forest land. So core buffer strategy, no need to go deep, just नाम तक समझना है. एक स्टेटमेंट हो सकता है प्रोजेक्ट टाइगर इज इंप्लीमेंटेड ऑन कोर बफर जोन स्ट्रैटेजी. ऐसा स्टेटमेंट आएगा तो सही है, इतना पता होना चाहिए, बस एग्जाम इतना इजी होता है. Then NTCA, National Tiger Conservation Authority. What is it? So Project Tiger is administered by this National Tiger Conservation Authority. It was established in 2006. क्योंकि 2005 में क्या हुआ, वे जो एक सरिस्का नेशनल पार्क है जो राजस्थान में, वहां टाइगर से एकदम से डिसअपीयर हो गया, का मतलब सबको कम हो गया. So then people have जो एनवायरमेंटलिस्ट होता है, they got angry. Then they created a body, National Tiger Conservation Authority. So it is a statutory body under the ministry. Under the ministry means जो मिनिस्टर होता है एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, MOEFCC का मिनिस्टर, वही इसका चेयरमैन होता है. So with an overarching capacity, supervisory coordination role, performing functions as provided in the Wildlife Protection Act 1972. So Wildlife Protection Act 1972 को 2006 में amend करके इसको बनाया है NTCA को. So it perform its functions under the Wildlife Protection Act 1972 only. Then headquarters New Delhi में है. Recently it has established regional offices also in Bengaluru, Guwahati and Nagpur also for better working. Then M stripes, इसकी अचीवमेंट्स की बात करें, एक है M stripes. What is M stripes? M stripes का फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स, इंटेंसिव पेट्रोलिंग एंड इकोलॉजिकल स्टेटस. What is it? It is a software based monitoring system launched across Indian tiger reserves in 2010. So ये software based GPS यूज करके टाइगर्स को मॉनिटर करने वाली सॉफ्टवेयर है M stripes. Then what is the objective? Its objective is to strengthen patrolling and surveillance of tigers. उसको पीछे जाके तो उसको देख नहीं पाएंगे ना वे कहाँ घूम रहा है, क्या हो रहा है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए जो बनाया है. Similarly, टाइगर नेट इज ए डायरेक्टरी ऑफ टाइगर्स एंड अदर वाइल्ड लाइफ मोर्टालिटी. मतलब कितने डेथ हो रहा है वे सारे एक डेटाबेस में लिखा होगा, ये सारे डेटाबेस है. दैट डायरेक्टरी इज कॉल्ड टाइगर नेट. सो इट इज एन ऑफिशियल डेटाबेस ऑफ NTCA. टाइगर रिजर्व्स की बात करें, 18 टाइगर स्टेट्स है एंड 50 टाइगर रिजर्व्स है एंड 2.08% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ आवर कंट्री इज पार्ट ऑफ टाइगर रिजर्व. गेटिंग मी? होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस. नाउ वी विल सी आफ्टर दैट सम ग्लोबल लेवल की बात करें, इंटरनेशनल टाइगर डे. सो सेलिब्रेटेड ऑन 29th July.
Global Tiger Initiative. What is it? So global alliance of governments, international organizations, civil society, the conservation and scientific communities, and private sector. That means it's not only the countries, many other things they came, organizations, many other organizations, private sector, they all came together to form this Global Tiger Initiative. It's a global alliance of many people. People means many organizations, private sector, governments and all. What is the purpose? The aim of working, what is the aim of working together to save wild tigers from extinction? Ultimately, goal is to save the tigers from extinction, and partnership of many organizations, private sector and governments. Then launched in 2008. In 2013, the scope was broadened to include snow leopards also. Not only tigers, even they started protecting snow leopards also. And GTA's founding partners include World Bank. Just एक idea के लिए दे रहा हूँ. Global Environment Facility, इसके बारे में हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे. क्लाइमेट में पढ़ेंगे. द स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन, सेव टाइगर फंड. नो नीड टू मग अप कौन कौन इन्वॉल्व है, बट मैं ये बोल रहा हूँ बहुत लोग मिलके बनाया है. Are you getting me? Even World Bank is one among them. Just World Bank, GEF को माइंड में रखे. World Bank Global Environment Facility. बिकॉज 10 साल हो रहा है ना बनके. अगर आप 2018 में एग्जाम देगा तो 10 साल हो रहा है. That's why it can be into again question can be asked. So the initiative is led by 13 tiger range countries. जो tigers are found only in 13 countries in natural state. So these countries they are called tiger range countries. वही इसको govern करेगा. ओके. सो इंटरनेशनल टाइगर फोरम. सो 2010 में ऑल दी टाइगर रेंज कंट्रीज का जो people have met in a place called St. Petersburg, which is in Russia, to adopt the St. Petersburg Declaration on Tiger Conservation and endorsed its implementation mechanism called the Global Tiger Recovery Program. So Global Tiger Recovery Program को initiate किया है, and they took a what you call St. Petersburg Declaration. That was see अभी पूछेगा नहीं, outdate हो चुका है, but कहीं just mind में रखे. So कहाँ इंटरनेशनल टाइगर फोरम वाज हेल्ड इन 2010 इन विच प्लेस? सेंट पीटर्सबर्ग. बस रशिया में है. अभी कोई काम का नहीं. And the goal was to double. What is the goal? Just mind में रखिए. To double the number of wild tigers across their geographical area from about 3,200 at that time to more than 7,000 by 2022. 2022 तक 2010 से लेके टाइगर्स का नंबर को डबल करना इनका गोल है. बस. No need to take it seriously. Then we have seen Project Tiger is being implemented in 18 states. They are Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Maharashtra, Chhattisgarh, Odisha, Madhya Pradesh, Rajasthan, UK, Uttarakhand and Uttar Pradesh. If you see this, all are there. Goa and Gujarat are missing. Northern states like जो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आर मिसिंग. देन झारखंड इज देयर, बिहार इज देयर, वेस्ट बंगाल इज देयर. नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट में असम इज देयर, अरुणाचल प्रदेश इज देयर, मिजोरम इज देयर. रिमेनिंग आर मिसिंग. आर यू गेटिंग मी? ऑल दीज स्टेट्स में गोवा, गुजरात आर मिसिंग. पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर आर मिसिंग. एंड नॉर्थ ईस्ट में एंड सिक्किम में, सिक्किम भी नहीं है. नॉर्थ ईस्ट 7 स्टेट्स में ओनली 3 आर देयर, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम. सो total 18 states. Then if you see first 9 tiger reserves जिस साल बनाया है, पहले साल में 9 tiger reserves को establish किया है. They are Jim Corbett in Uttarakhand. Similarly we have Ranthambore in Rajasthan. We have Manas in Assam. Similarly we have Sundarbans in West Bengal, and we have Palamu in Jharkhand. We have Kanha in Madhya Pradesh. Similarly we have Melghat in Maharashtra, and we have Simlipal in Odisha, and we have Bandipur in Karnataka. These are first 9 tiger reserves. Initial 9 tiger reserves. Important है. So 1973 the project Tiger was launched in Palamu Tiger Reserve, but even which of the following was the first tiger reserve? ऐसा करके पलामू ऑप्शंस में नहीं है, कॉर्बेट ऑप्शंस में है. कोई बात नहीं, go for कॉर्बेट. That is what I am saying. So remember all 9. Now important tiger reserves की बात करें, सरिस्का इन राजस्थान, नामदफा इन अरुणाचल प्रदेश, दूधवा इन उत्तर प्रदेश, वाल्मीकि इन बिहार एंड दंपा इन मिजोरम. सम important tiger reserves in north part. Similarly even काजीरंगा इन असम. काजीरंगा में टाइगर भी है, एलिफेंट भी है, राइनो भी है. बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है. सेंटर की बात करें, इंद्रावती इन छत्तीसगढ़, अचनकवार इन छत्तीसगढ़, पन्ना इन मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ इन मध्य प्रदेश, पेंच इन मध्य प्रदेश, सह्याद्री इन महाराष्ट्र.
साउथ की बात करें, पेरियार इन केरला, पेरम्बिकुलम इन केरला, मुदुमलाई इन तमिलनाडु, अन्नामलाई इन तमिलनाडु, नागार्जुन सागर श्रीशैलम इन आंध्र प्रदेश. इट इज लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया. देन रीसेंट टाइगर रिजर्व्स की बात करें, जो राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड इज द 48th टाइगर रिजर्व. पहले 47 थे, रिसेंटली 3 डिक्लेयर और किया है. राजाजी वाज द 48th एंड वरांग नेशनल पार्क ऑफ असम इज द 49th एंड कमलांग नेशनल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज द 50th टाइगर रिजर्व. सो दीज आर लेटेस्ट 3 टाइगर रिजर्व्स. थोड़ा पुराना की भी बात करें, मींस इससे पहले जो डिक्लेयर हुआ उसकी बात करें, अमराबाद इज सेपरेटेड फ्रॉम नागार्जुन सागर श्रीशैलम ओनली एंड इट इज पार्ट ऑफ तेलंगाना स्टेट. पहले नागार्जुन सागर श्रीशैलम वाज पार्ट ऑफ कॉमन आंध्र प्रदेश. नाउ तेलंगाना स्टेट सेपरेट होने के बाद उससे क्या है, कुछ पार्ट को जो तेलंगाना में आ रहा है उसका अमराबाद नाम दिया है. सो स्टिल नागार्जुन सागर श्रीशैलम इज द लार्जेस्ट इन एरिया आफ्टर पार्टीशन आल्सो. सो इट इज पार्टीशन फ्रॉम नागार्जुन सागर श्रीशैलम. देन कवल in Telangana state and Satyamangalam in Tamil Nadu. We have Navegam, Nagjira in Maharashtra. We have Bor in Maharashtra. Similarly, Pilbit in Uttar Pradesh. And we have Mukundra Hills in Rajasthan. These are थोड़ा मीन्स ये लेटेस्ट 3 से पहले जो डिक्लेयर हुआ टाइगर रिजर्व है वे. जस्ट यू कैन कीप इन माइंड. Then if you see, Karnataka is the state with highest tiger population. Similarly, Uttarakhand is the state with highest tiger population density. That too recent time पे उत्तराखंड में टाइगर्स बहुत बढ़ गया है. इनफैक्ट उत्तराखंड इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स. दैट्स व्हाई राजाजी नेशनल पार्क को भी टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया है, क्योंकि वहां टाइगर्स बहुत बढ़ गया है. सिमिलरली, कॉर्बेट इज द नेशनल पार्क विथ हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन. कौन सी नेशनल पार्क में, कौन सी टाइगर रिजर्व में ज्यादा टाइगर्स है, दैट इज इन कॉर्बेट. सिमिलरली, नागार्जुन सागर श्रीशैलम इज द नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व विद द लार्जेस्ट एरिया. टाइगर रिजर्व, सॉरी, नॉट नेशनल पार्क, लार्जेस्ट एरिया. होप यू गॉट important points. Then we have seen Project Elephant. What is Project Elephant? It is launched by the government of India in the year 1992. Project Tiger was in 1973. Project Elephant in 1992. Again, it is also a centrally sponsored scheme. It provides funds to the concerned state governments, so they implement it. And objectives are again to protect elephants, their habitat and corridors. जो रास्ता में घूमता है उसका भी प्रोटेक्ट करना है, because they cannot be isolated. They cannot stay at one place. They need to have certain area to move from one place to another. So corridors को भी प्रोटेक्ट करना. To address issues of man-animal conflict and welfare of captive elephants. Even captive elephants का welfare भी included. So these are all objectives. No need to mug up. Just mind में रखिए. Otherwise, if you see 2017 after starting 1992 means 25 add करिए 2017. That means this is the 25th year of launching Project Tiger. So 25 years होने के कारण obviously, sorry, Project Elephant. So 25 years होने के कारण कुछ तो बनाएगा जो उसकी जो कंसर्न डिपार्टमेंट. तो न्यूज में होता रहता है, एग्जाम में पूछ भी सकता है. एंड इंप्लीमेंटिंग स्टेट्स की बात करें, 16 स्टेट्स आर इंप्लीमेंटिंग. दैट मींस 16 स्टेट्स में एलिफेंट्स आए. केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश साउथ का, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा. Pause it and watch it. Otherwise, go to main video. वहां मैप के थ्रू मैंने समझाया. You can watch it. 32 elephant reserves है. No need to remember the names. Just एक आइडिया रखे. 50 टाइगर रिजर्व्स आर देयर, 32 एलिफेंट रिजर्व्स आर देयर. अकॉर्डिंग टू 2017 सेंसस, रिसेंटली अगस्त में रिलीज हुआ है, एंड अप्रोक्सीमेटली 27,000 एलिफेंट्स आर देयर इन इंडिया. एग्जैक्ट नंबर भी मैं दे सकता हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं दिया हूं क्योंकि याद रखने की जरूरत नहीं. बट टाइगर से कंपेयर करेंगे तो एलिफेंट्स का नंबर बहुत ज्यादा है. हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स आर इन कर्नाटका. इवन हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स आर आल्सो इन कर्नाटका. सो अराउंड 6,000, एग्जैक्टली बात करें 6,049 एलिफेंट्स आर देयर इन कर्नाटका. नो नीड टू रिमेंबर, वैसा नंबर से कुछ लेना देना नहीं. बट याद रखिए कर्नाटका हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स आल्सो, टाइगर्स आल्सो. सिमिलरली सेकंड हाईएस्ट इज असम 5700. थर्ड हाईएस्ट नंबर एलिफेंट्स इन केरला. सो साउथ इंडिया में ज्यादा एलिफेंट्स हैं एंड नॉर्थ ईस्ट में सेकंड है. नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया में बहुत कम, 10-20 बहुत कम एलिफेंट्स है एक एक स्टेट में. लाइक आंध्र प्रदेश, कितने एलिफेंट्स है? आंध्र प्रदेश में भी टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व स्टेट है, लेकिन एलिफेंट्स कितना है? 40-50 लाइक दैट, बहुत कम है. सो यहाँ थाउजेंड्स में है. गेटिंग मी?
नेक्स्ट सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, एलिफेंट इज द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल मम्मल ऑफ द वर्ल्ड। यू नो ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट मम्मल, ओवरऑल की बात करें, टेरेस्ट्रियल प्लस मैराइन की बात करें, ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट मम्मल। एंड ये मम्मल क्या होता है वे सारे हम साइंस में पढ़ेंगे, अभी आप कंफ्यूज मत हो जाइए। सो एलिफेंट इज द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल मम्मल। एंड इफ यू सी माइक प्रोग्राम, व्हाट इज माइक का फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। So illegal killing को monitor करना. It is implemented by sites. Being implemented by sites. What is sites? Environment related organizations. Fifth part में समझाऊंगा. So it was started in 2013 started in 2003 in South Asia. And purpose is to provide information needed for elephant range states to make appropriate management and enforcement decisions. So indirectly speaking एक ऐसा knowledge देना है elephant countries को, जहाँ कौन सी countries में elephants है उन countries को knowledge देगा to manage them properly. So for better appropriate management and enforcement decisions and to build institutional capacity within the range states for the long term management of their elephant populations. So ऐसा institutional mechanism build करे so that लॉन्ग टर्म में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कर पाए। इतना वर्ड टू वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं, अल्टीमेटली क्या है नाम से ही पता लग रहा है, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स मींस इनडायरेक्टली टू प्रोटेक्ट द एलिफेंट पॉपुलेशन। दैट मींस इट इज इंप्लीमेंटेड बाय being implemented by sites, अभी भी चल रहा है। वर्ल्ड एलिफेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 12th August. Getting me? So these are all what we have seen in the second episode. Hope you got it. Thank you very much. Very simple. You see, finally the whole environment module I will teach you in just 1 hour. That is my target. I will do this in coming 2-3 days. Just wait. Once 4 episodes are completed, I will do, and I will give you all the previous questions of prelims and mains which were asked in various exams and show you how simply you can remember the module. Like that we do for every module. You need to have some patience. Hope you enjoyed this video. Thank you for watching. Take care. Bye.